Hello guys, welcome to a new and fresh vlog. And today we are going to travel to Sundarbans. If you guys have been following my channel, you must have noticed that I have posted videos on Sundarban before also. But then it was more on what are the places we can visit in Sundarban. This video is going to be a full-fledged video on a resort called the Solitary Nook. So let's see what we have got and let's travel. So hi guys, as you know, to decorate the resort, right? We need to plant some trees and all. So there's a wholesale market in Patuli where they sell flowers and plants too. So we have come here to purchase some plants, and we will go back to the resort and try to decorate it with these. So keep watching. अभी हम लोग थोड़े से रुके थे इधर ब्रेकफास्ट करने के लिए. I'll just give you the glance and keep watching. It was at this moment that he knew. He fucked up. Guys, we have reached Hooghly now and अभी हम लोग उधर से बोट पकड़ेंगे. बोट पकड़ के उस पार जाना पड़ेगा. उसके बाद उधर से वैन है. वैन लेके हम लोग रिसोर्ट पहुँचेंगे. तो अभी हम लोग इधर गाड़ी पार्क कर रहे हैं. उसके बाद निकलेंगे इधर से. Enjoy the cinematics. गाइस अभी हम लोग इधर घाट पे खड़े हुए हैं. शोनिप से हाय. हाय. So we are going to go that side. That side we are going to go that side, okay? And I'll keep you guys updated once we reach hotel. I'll let you guys know. Stay updated. So guys, we have almost reached our destination, and now from here we need to walk. We said goodbye to the van, and now from here we need to walk because the van cannot go in front of the resort. The road is really steep over here. So I'll let you guys know once I reach there. So guys, we have reached our resort, and you can see the resort behind me, and we're just walking. Here is a pond. There is a fishing place also over there. I'll show you guys. उधर ही है. हम अब उधर बैठ के मछली पकड़ सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रीनरी है आसपास. आप पीछे देख सकते हैं. वैसे भी I'll give you the cinematics of the whole resort. And I'll keep you updated. Please watch the full video. Also do like, share and subscribe. Good afternoon. And अभी मैं इधर दूसरे एंड पे खड़ा हूँ इस होटल का. और अभी हम लोग थोड़ा बोर हो रहे थे तो सोचे कि थोड़ा फ़ोटोशूट कर लेते हैं. हेलो गाइस, तो अभी हम लोग थोड़ा सा छत पे आए हैं. अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स खा रहे थे. ये रहा कोल्ड ड्रिंक्स. और बहुत अच्छा सीनरी है. अभी एक साइड में चांद दिख रहा है और एक साइड में सनसेट. बहुत अच्छा लग रहा है. हेलो गाइस, सो गुड मॉर्निंग. वेलकम टू द नेक्स्ट डे. एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज़ लाइक कल हम लोग सो गए थे. उसके बाद हम लोग बहुत टायर्ड थे इसलिए हम लोग सो गए थे. और अभी आप लोगों को पूरा रिसोर्ट घुमा के दिखाने वाला हूँ. अभी सुबह के 7:20 बजे हुए हैं और दिखाते हैं आपको रिसोर्ट.
लोगों को पीछे जो बिल्डिंग टाइप दिख रहा है, ये पहले नहीं था, ये सिर्फ कॉटेजेस था। पीछे जो कॉटेजेस है वही था पहले। ये किया गया है, एक एक साल भी नहीं हुआ है ये किया गया है, क्योंकि इस सीज़न जब होता है तब बहुत प्रेशर रहता है। मतलब होटल करीब करीब फुल रहता है और इसीलिए हम लोग स्पेस नहीं दे पाते। तो इसीलिए अभी हम लोग ये बनाए हैं, तो ताकि अगर कोई आए तो उसको लौटाना नहीं है, रखना है इधर। और तो बस वही है। और आज हम लोग लौटने वाले हैं घर। शायद आज बारिश होगा क्योंकि वेदर वैसा ही है। और आज ही लौटेंगे, अभी अभी निकलेंगे। सुबह हो गया है, देखते हैं। लेकिन इधर सुबह बहुत अच्छा लगता है, कोई गर्मी नहीं है। गर्मी नहीं है उतना, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। Guys, so that was it for today, and we are leaving the resort now. So if you guys like the video, then do like, share and subscribe. And also, ये कौन है मेरे पीछे? अरे भाई! और do share and comment down below which place should I visit next. Till then, bye. পুরী তো প্রফেশনালি করো, ওইভাবে বুড়ি ছোঁয়া করে দেখা হ্যাঁ